हाय गाइस, स्वागत है आपका ऑन येट अनदर एपिसोड ऑफ फीमेल क्रिकेट लाइव। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कल का मैच जो हुआ था गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच, और फिर हम डिस्कस करेंगे आज का मैच प्रीव्यू और फैंटेसी पिक्स। तुरंत एक रिकैप ले लेते हैं कल के मैच का। गुजरात के कप्तान बेथ मूनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बेथ मूनी और दयालन हेमलता टॉप स्कोरर्स रहे फॉर गुजरात जायंट्स। बेथ मूनी की 66 रन्स की पारी और दयालन हेमलता की 74 रन्स की पारी के चलते गुजरात ने अपने 20 ओवर में 190 रन्स का एक टोटल रजिस्टर किया। एक बड़ा टोटल चेस करते हुए मुंबई इंडियंस का स्टार्ट थोड़ा स्लो था और एक क्विक सक्सेशन में मुंबई इंडियंस ने नैट सिमरन और हेली मैथ्यूज का विकेट खो दिया। फिर हरमनप्रीत कौर और अमिलिया कर के बीच 93 रन की साझेदारी हुई, जिसमें से केवल 12 रन अमिलिया कर ने बनाए थे। हरमनप्रीत कौर ने एक तूफानी पारी खेली, मुंबई इंडियंस को एक लूजिंग सिचुएशन में से मैच जिताया उन्होंने। 95 रन और 48 बॉल्स की पारी के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। तो जूली, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वी सॉ हरमनप्रीत हिट सम ऑफ द बिगेस्ट सिक्सेस वी एवर सीन on most grounds that would have cleared the fence. Like we saw yesterday, the dimensions of the ground were a bit skewed, but eventually those sixes would have been sixes on most ground. So, what do you have to say about yesterday's match? लाजवाब मैच कहूंगी मैं मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से। हालांकि गुजरात जायंट्स थोड़े अनलकी रहे, क्योंकि अगर हम देखते वो जो फीबी लिचफील्ड का अगर वो जो कैच वो पकड़ लेते लॉन्ग ऑन के ऊपर, हरमनप्रीत कौर तभी केवल 40 रनों पर ही थे। मैं केवल इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके बाद उन्होंने और 55 रन जोड़े उनके वो 40 रन के स्कोर को। तो इसीलिए आई थिंक वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था जो मिस करा। और हमने भी देखा होगा जब भी वो मैच शुरू था तो उसके बाद हर एक रन जो हरमनप्रीत कौर स्कोर कर रही थी, द कैमरामैन दे वर वेरी विजिलेंट, दे वर वेरी अलर्ट। फीबी लिचफील्ड काफी वो स्क्रीन टाइम मिला कल उनको, क्योंकि आई थिंक दैट ड्रॉप कैच वाज हर्टिंग हर। एवरी रन वाज लाइक अ फ्रेश वुंड जो आई थिंक फीबी लिचफील्ड और गुजरात जायंट्स के खेमे में था तभी। पर आई थिंक मैच की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आई थिंक हरमनप्रीत कौर एक लाजवाब इनिंग्स उनके बल्ले से आई। और मैं जरूर कहूंगी कि काफी समय के बाद हमने ऐसे हरमनप्रीत कौर को देखा है, क्योंकि अगर WPL 2024 की हम अगर शुरुआत से भी देखें तो पहले 2 मैचेस उन्होंने बिल्कुल रन्स करे थे, पर कल का जो उनका जो इनिंग्स था वो बहुत ही फ्री फ्लोइंग था। और उनको अक्सर जैसे कि कहते हैं कि हरिकेन हरमन, तो आई थिंक वैसे ही कुछ उन्होंने प्रदर्शन करा। और 2017 की जो वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल की जो इनिंग्स खेली थी उन्होंने 171 नॉट आउट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मुझे उस इनिंग्स की यादें ताज़ा हुई उस कल के इनिंग्स के बाद। काफ़ी सिमिलैरिटीज थे, तभी भी उनकी एक स्टार्ट स्लो थी। उस मैच में भी अगर हमें याद हो तो शी वॉज कमिंग आउट ऑफ सिकनेस, वो 100% फिट भी नहीं थी, पर तो भी उन्होंने वो मैच विनिंग पारी खेली और इंडिया को फाइनल लेकर गए। तो कल की मैच वैसी ही कुछ थी हरमनप्रीत के लिए। कप्तानी कर रही है मुंबई इंडियंस की एंड शी लेड फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि अगर हम उनका इनिंग्स भी देखें तो पहले 20 रन 21 गेंदों में आए थे, पर उसके बाद के जो 75 रन है वो केवल 27 गेंदों में आए थे। तो अचानक से जो गाड़ी हरमनप्रीत की पहले गियर पे चल रही थी, अचानक वो 5वां गियर उन्होंने डाल दिया और एक अलग अंदाज से वो खेलने उतरी। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा है कि मुंबई इंडियंस हैज बीन एन एक्सीलेंट चेजिंग साइड। मेरे ख्याल से केवल एक ही मैच उन्होंने चेस करते हुए हारा है पूरे WPL के अंदर 2023 और 24 को मिलाकर। तो यही दिखाता है कि इस टीम को चेस करना पसंद है, कुछ भी लक्ष्य हो उनके सामने, 190 हो, 200 हो या कुछ भी हो। आई थिंक दिस टीम इज वेरी कंफर्टेबल चेजिंग। वो खुद को बैक करते हैं, उनको भी पता है उनका स्ट्रेंथ चेजिंग है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि हरमनप्रीत कौर ने जिस तरीके से वो चेस को लीड करा, बाकी वो चेंज रूम के अंदर भी काफी कंफर्टेबल वो महसूस कर रहे थे। जब तक उनकी कप्तान है उनको लगा कि ये चेस हो सकता है। बट जस्ट टू थ्रो सम लाइट ऑन गुजरात जायंट्स, आई थिंक दे वन द टॉस। अच्छा टॉस जीता था, बेथ मूनी ने पहले बल्लेबाजी करी, जो उनका कंफर्ट हमने देखा है पिछले मैच के अंदर भी जब RCB के खिलाफ उन्होंने खेला था। 199 रन स्कोर करे थे गुजरात जायंट्स ने, और कल भी 190 रन उन्होंने डाले। हालांकि हम कहेंगे आखिर में कि 10-15 रन कम पड़ गए जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी करी। पर बेथ मूनी कप्तानी पारी दोबारा उनके बल्ले से हमने देखी, और दयालन हेमलता जिनके बारे में काफी चर्चा हो रही थी कि वो प्लेइंग 11 में उनको लगातार मौका मिल रहा है पर बड़ी इनिंग्स आ नहीं रही थी उनके बल्ले से। दयालन हेमलता ने भी फाइनली प्रूव कर दिया कि वो क्यों प्लेइंग 11 के अंदर है। टॉप स्कोरर रही गुजरात जायंट्स के लिए। पर मेरे ख्याल से जब बेथ मूनी का विकेट गया, जो एस सजना ने उनको क्लीन बोल्ड करा, वो यूजुअली हम देखते हैं ब्रेक्स के बाद विकेट चली जाती है, और कल के मैच में काफी ऐसे हुआ ब्रेक के बाद विकेट जा रही थी। तो
तो जब आई थिंक बेथ मूनी को आउट करा दयालन हेमलता ने 139 रन कुछ बनाए थे जीजी ने, और उसके बाद अगर आप देखें तो केवल 41 गेंदें बाकी थी पूरे 20 ओवर्स के लिए और 51 रन ही जोड़ पाई। आई थिंक तभी गुजरात जायंट्स ने जरूर थोड़ा सा मैच वहां पे गवा दिया, मुझे लग रहा है 10-15 रन जैसे कि मैंने पहले कहा वो कम पड़ गए। बट ऑल क्रेडिट टू मुंबई इंडियंस बोलर्स, स्पेशली साइका इशाक, पूजा वस्त्रकार और एस सजना, इनकी तारीफ यहाँ पे करनी चाहिए। उन्होंने अच्छा कमबैक करके दिया मुंबई इंडियंस को। और फाइनली जब चेस की बारी आई, हमने देखा कि यस्तिका भाटिया एज यूजुअल अच्छे फॉर्म में लगे, उन्होंने अच्छी स्टार्ट दी मुंबई इंडियंस को। हालांकि हेली मैथ्यूज अगर हमने देखा होगा तो 9 गेंदें लगी उनको पहला रन स्कोर करने के लिए, तो ये दिखा रहा था कि वो पिच काफी स्लो एंड लो भी था, तो बिल्कुल भी आसान नहीं था वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए। और आई थिंक उसकी वजह से ही हरमनप्रीत ने भी जो स्टार्ट करा था वो काफी स्लो था उनका। आई थिंक शी गॉट अ मेजर ऑफ द पिच कि कैसा पिच बिहेव कर रहा है, और उसके बाद जब उनको पता चला कि क्या वो कर सकती है इस पिच के ऊपर, शी जस्ट अनलीस्ड हर ऑल द शॉट्स दैट शी हैड इन हर रेपर्टुआर। तो वो देखने में मजा आया। बट आई थिंक एक टफ डे आई थिंक इन द ऑफिस फॉर गुजरात जायंट्स बोलर्स एंड फील्डर्स, बिकॉज कैचेस विन मैचेस जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं, तो अगर वो लिचफील्ड का कैच होता तो आज शायद कुछ अलग स्टोरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे मुंबई इंडियंस हैव वन दैट मैच, दे हैव बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ WPL, तो kudos to them. बिल्कुल, यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट टीम इन दिस WPL सीजन टू विन चेजिंग एट दिल्ली। और थोड़ा सा एक वर्ड प्ले करना चाहूंगा, हरमनप्रीत कौर नहीं, उनको आज पे हरमनप्रीत थौर बुलाते हैं अब, जिस हिसाब से उन्होंने वो चौके छक्के मारे हैं इन द लास्ट 6 overs स्पेशली। आई थिंक द गुजरात bowlers are in for a nightmare for some time at least. Pratik, I would like to ask you, what are your views on yesterday's game? Well, Yazad, the way Gujarat Giants got started off yesterday, it was a little bit shaky, losing Laura at the top there. But then again, the way Beth Moody and Hemalata, the way they came forward and steadied the innings was something to watch out for. We've seen Beth Mooney's game, and even yesterday she used her feet to good effect, even against the medium pacers, and she was the Beth Mooney that we've seen over the years, and we got to see her yesterday also. So kudos to her, the way she got going, and this was her second back-to-back 50 in the tournament as well. So great going for her on a personal note. And Hemalata, someone who still hadn't taken off until yesterday's game, again, brilliant prospect for Indian cricket. And something different with her. Her foot doesn't move to every ball that she goes to hit, but she's gotten those free flowing hands, which makes sure that she goes on to connect every ball that is out there. And that was something different about her. And she also made good use of the aerial route yesterday. We could see early on also, the way she got going was spectacular. And both of their partnership made sure that Gujarat's total were in safe hands. Something we've been discussing, that their middle order haven't been contributing, but thanks to them yesterday, this partnership came off extremely well. And also that it was a right and left hand combination of partnership, so it was spectacularly well done, which got them to around 190 runs. And on any given day, you would know that it is a good total in any given ground as well, because chasing 190, the opponents would have to be on their feet from the very first ball. And once again, the way Mumbai Indians got started, we've seen Yastika Bhatia doing it, but for the last couple of games, she was falling short on runs. She came back stronger again yesterday, and got started in her own fashion to put Mumbai Indians ahead in the power play. Although Haley Matthews took some time to get off, to connect the ball, she too pitched in with her boundaries later on. But again, perished very early, and more than a runner ball. So that was worrying Mumbai Indians there at the top, because they were chasing a mammoth total of 190. But then it was all about the way Harmanpreet Kaur came and took the game away from them. They even lost Nat Cyber Brent a little early on. But for me, what stood out about Harmanpreet was
the way she used her feet against the spinners. And somewhere I feel that the Gujarat Giants spinners did not adapt to that, because she kept stepping out, and effort would have been made to pull the ball back to themselves, but it wasn't evident on the screen. And her ploy against the spinner was similar, be it Tamja Kanwar or even Sneha Rana. The way she stepped out and hit those mammoth sixes, I don't think we witnessed anything in the WPL, until yesterday. So spectacularly well done. Even in the last over, the last couple of overs, she continued to step out, and I felt there that Ashley Gardner should have, proactively pulled the length behind, because Harmanpreet did not possess a lot of back foot shots yesterday against the spinners. Even if she did, those shots did not produce runs. So the think tank of Gujarat should have thought about this. And that over, which went for 24 runs in the 17th over, that was the game for them there, because the momentum was taken. And also the fact that Mumbai Indians did not lose wickets at regular intervals. It was only after, Nat Cyber departed, Harmanpreet, took the responsibility into her own hands, and made sure that the wickets weren't falling at the other end. And often, when you're chasing such a huge total, if you have wickets at the end of it, you could even, back yourself to score about 40 in the last two overs. And that's exactly how Mumbai Indians went on to script an iconic victory yesterday, the highest run chase, I guess, in the WPL. And they are on to the finals now. They are qualified to the next stage of the game. So big ups to Mumbai Indians. I'd like to mention something that you stated about the Gujarat Giants middle order. So when Dayal and Hemlata and Beth Mooney were batting, I'm pretty sure we all were thinking that Gujarat is going beyond 200 today. And then the usual Gujarat middle order turned up. We saw a collapse, mini collapse, not exactly a collapse. But from the start that Dayal and Hemlata and Beth Mooney had given them, there were chances that we would see a 200 plus total. Yash, I would like to ask you, what are your views about yesterday's game? I think Gujarat Giants gifted away the advantage they had on to Mumbai Indians in on both the occasions, be it the batting innings or at the bowling innings. बैटिंग इनिंग्स में जो सेकंड विकेट का जो पार्टनरशिप हुआ था हेमलता और बेथ मुनी के बीच, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया था गार्डनर और लिचफील्ड के लिए वहां से अटैक करने के लिए. बट दोनों का वापस से बैटिंग में फेलियर आया. बट यहाँ पे मैं WPL की जो डेब्यूटेंट थी कल, भारतीय फुलमाली, उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उनके पहले ही मैच में, और कंसिडरिंग गुजरात एक डू और डाई सिचुएशन में थे वो मैच में, तो उन्होंने फर्स्ट ही इनिंग्स में उन्होंने एक कैमियो खेला 13 बॉल 21, और उस कैमियो के कारण एक जो वहाँ पे 170 का होता था तो 190 तक पहुंच पाए. और दूसरा ये कि बॉलिंग के टाइम पे भी सिमिलरली जो वो फील्ड में फिबिलिच फील्ड को हम ऐसा वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स बोलते हैं, स्पेशली कैचिंग का जब आता है, तो वो हरमनप्रीत कौर का जो कैच था तभी वो 40 पे थी. तो उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने आई थिंक अराउंड 50 to 55 रन और ऐड किए. तो वहां पे एक वापस गेम चेंज हो गया, और फिर वो एक वहां से हरमनप्रीत कौर ने वो अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठा के फिर बाद में चांस ही नहीं दिया गुजरात को वापस आने के लिए. So this was our recap of yesterday's game. Quickly अब एक झलक डालते हैं आज के मैच की ओर. आज का मैच जो है वो होगा दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच. दिल्ली कैपिटल्स अपना पिछला मैच यूपी वॉरियर्स के सामने हारे थे. 1 रन से हारा था वो मुकाबला उन्होंने. एक काफी क्लोज एनकाउंटर था. और दूसरी ओर अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात की जाए तो वो अपना पिछला मुकाबला गुजरात जायंट्स के सामने हारे थे. सो दोनों ही टीम्स एक तरह से कम बैक करना चाहेंगी इस मुकाबले में. सो आई ओपन द क्वेश्चन टू माय गेस्ट. जूली, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट टुडेज गेम? आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से. अगर हम ये दोनों टीमें देखें, टॉप 3 के अंदर ये दोनों टीमें फिलहाल है. पर आज का मैच अगर दिल्ली कैपिटल्स जीतती है तो आई थिंक दे विल ऑल्सो क्वालिफाई along with Mumbai Indians and they'll move on to the next round of WPL.
तो ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल्स चाहेंगे कि एक जीत यहाँ पे हासिल कर ले और उनकी पोजीशन सिक्योर कर ले, क्योंकि अगर हम देखें अभी तक 6 मैचेस खेले हैं, 4 मैचेस में जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स, तो 8 अंक है उनके पास। मुंबई इंडियंस के पास अभी 10 अंक हो गए हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास यहाँ पे मौका है कि आरसीबी को हरा के भी क्वालिफाई हो सकते हैं यहाँ पे। पर अगर हम देखें तो दोनों टीमें एक लॉस के बाद आ रही है, और एक कॉमन फैक्टर यही रहा है कि दोनों टीमें चेजिंग करते वक्त हारी है। अगर हम देखें तो डीसी का काफी करीबी मामला हुआ था, जो उनका मैच हुआ था यूपी वॉरियर्स के साथ, थोड़े से अनलकी जरूर रहे थे। वो मैच ऑब्वियसली दिल्ली कैपिटल्स का ही था, आई थिंक फॉर गुड 17-18 ओवर्स हम कहेंगे, पर जो आखिरी 2 ओवर जो थे यूपी वॉरियर्स ने करे, तो आई थिंक तभी वो मैच पलट गया। बट आई थिंक डीसी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, मुझे यही लग रहा है। वो पिछला मैच आई थिंक दे जस्ट swallow it like a bitter pill जो उन्होंने चखी, आई थिंक यूपी वॉरियर्स के सामने दे कम आउट स्ट्रॉन्गर। मैगलैनिंग विल नो कि उनको अगर स्टार्ट मिल रहा है, एक हाफ सेंचुरी वो लगा रही है, तो शी सी टू इट कि शी प्लेस थ्रू वॉट एवर बी द केस, डिफेंडिंग हो या चेजिंग हो, उनके दिमाग में यही होगा कि शी टेक द ओनर्स ऑफ द बैटिंग कंप्लीटली ऑन हर। क्योंकि हमने देखा है मैगलैनिंग की कप्तानी कैसी होती है, बैटिंग कैसी होती है, शी डज नॉट लाइक टू लूज। और वो जो लॉस था वो जरूर उनको हर्ट होगा, बट आज एक मौका है उनके पास। और दूसरी तरफ अगर हम आरसीबी की बात करें तो पिछला मैच जो जीजी के खिलाफ हुआ था, काफी अच्छा रन चेज उन्होंने करा। मैं कहूंगी 199 का वो जो टारगेट था उनके सामने, केवल 19 रन ही कम पड़े, 180 बनाए उन्होंने अपने 20 ओवर्स में। तो आई थिंक आरसीबी भी एक अच्छे मैच के बाद अभी डीसी के सामने उतरेंगी, और देखना होगा आज फाइनली किसका पगड़ा भारी होता है। एक अच्छा कॉन्टेस्ट हम जरूर उम्मीद करेंगे। पिछले 2 मैचेस अगर हम देखें डब्ल्यूपीएल के अंदर, तो दोनों लास्ट बॉल थ्रिलर्स थे, तो आज भी वैसे ही कुछ हो सकता है। दोनों चैंपियन टीम्स है, दोनों के पास क्वालिटी प्लेयर्स मौजूद है, तो यही कुछ हो सकता है। पर अगर हम हेड टू हेड भी आंकड़े देखें तो डीसी के फेवर में है, 3 मैचेस डीसी ने जीते हैं, आरसीबी ने 0, तो वो भी आज काफी प्ले में आएगा। देखना होगा क्या क्या होता है। और राउंड 1 भी अगर हम देखें ये दोनों टीमों के बीच, तो डीसी ने मैच जीता था, तभी उन्होंने स्कोर पोस्ट करा था और उसके बाद डिफेंड भी करा था सक्सेसफुली। तो देखना होगा आज टॉस के वक्त क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा है दिल्ली के अंदर की टीम्स बैटिंग फर्स्ट हैव वन 4 आउट ऑफ द 5 मैचेस, तो ये दिल्ली कैपिटल्स के फेवर में ज्यादा लग रहा है मुझे आज का मैच। बट ऑब्वियसली यू कैन नेवर राइट ऑफ आरसीबी, उनके पास भी काफी स्टार प्लेयर्स है, तो काफी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होगा आज का, मुझे लग रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आरसीबी का 3-0 लूजिंग रिकॉर्ड है अगेंस्ट द दिल्ली कैपिटल्स, so there is room for improvement from the RCB perspective, और स्मृति मंदाना चाहेगी कि they register their first victory against दिल्ली कैपिटल्स, और वो एक जगह कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगी टॉप 3 में। Pratik, my question to you is how important a game is it from an RCB perspective? Well, Yazad, so the last time around when RCB played Gujarat Giants, both in the batting and bowling departments, the spearheads of both the departments, there are certain people who the team relies on. Say for batting, it is Priti Mandana, and in the bowling against someone like a Sophie Molineux. So, these top people weren't successful in, doing their duties that comes to it. So, even in the bowling department, conceding about 190 runs in the first innings was quite disappointing. It all adds up because they've been shabby on the field at times, and the bowlers have not stick to their lines and lengths, which have hurted them. And they went about conceding 190 runs. And even when it comes to chasing at the top, the batters did get the starts, but weren't able to convert it. And when you are approaching the business end of the tournament, your top batters will have to play out the power play and continue into the innings, or else for the batters coming in it would anyways become difficult. And last time around we did see Georgia Barham with that brilliant innings lower down the order, which obviously would get every RCB fan excited. But these aren't good signs that as a team you are relying on someone like Georgia Wareham, whereas you've gotten all the firepower that is required at the top of the order. So it is important for the respective people to step in at the right moment in the game and make sure that their contributions are noted. And especially because today's game and the way the points table stands today, it is extremely critical for RCB to go on and register the victory. They do not have a good net run rate also on the board because
whenever they've lost games, they've lost it with quite some margin. So a lot of things for RCB to look into today. No, not about chopping and changing the team, but their approach to the game, and about how positively they walk onto the field, because it's all in the mind at this point of time. We know that their team consists of all the renowned players, and they have delivered in the past as well. But it's about culminating everyone's effort into contributing to today's potential victory for them. So my question to Yash you is, how important is it a game for Delhi? Because them winning would mean that they are the second team to qualify for the knockout stages. दे नीड टू विन. जैसे कि अभी पिछले मैचेस में हमने देखा, पिछला मैच में देखा था कि एनाबेल सदरलैंड आई थी मैरिसन कैप के बदले, तो आई थिंक दे विल गो बैक टू द ओरिजिनल कॉम्बिनेशन दे प्लेड. और एक विन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कल मुंबई इंडियंस के लिए एक विन का क्वालिफिकेशन में जगह बना था, तो एक जितना जल्दी फ्रॉम द दिल्ली पर्सपेक्टिव जितना जल्दी एक क्वालिफिकेशन स्पॉट सील होता है, उनको एक एडवांटेज रहेगा कमिंग इनटू द लेटर स्टेज. So that with that, I'd like to take a fan question right now. What's your opinion on RCB openers? Should Meghna continue to open, or should RCB go with their previous pair, that is Devin and Smriti? And according to you who will lift this year's WPL title, I think let's not rule out any teams as of now for the championship. But let's answer the first part of the question about the RCB openers. So I think Meghna has done well so far. Opening the innings, she's played two good knocks. She was not able to replicate the same in the previous match, and I think it is somewhat a better opening pair than what we've seen Devin and Smriti. Because just purely because of the fact that Sophie Devine has not been in the form that we know her to be. So I think they should probably go ahead with Meghna, give her probably a yet another game or to see how that opening pair pans out. But I'll still ask my guest, Julie, what are your views on this question? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, और आई थिंक आरसीबी भी पॉन्डर कर सकते हैं कि क्या ओपनिंग पेयर होना चाहिए. स्मृति मंदाना जो कप्तान है वो तो फिक्स्ड प्लेयर है, वो ओपनिंग पोजीशन के अंदर, पर उनके साथ जो सबिनेनी मेघना हमने देखा है पिछले 2 मैचेस में, मेघना को मौका मिला था. हमने उसके पहले जो देखा है, नंबर 3 पे आती थी मेघना बल्लेबाजी करने के लिए, तो ये टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, तो 1, 2, 3 ये किसी भी ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकती है मेघना. पर पिछले 2 मैचेस अगर हम देखें तो पहली बार जब उन्होंने ओपन करा था वो एमआई के खिलाफ था, तभी उन्होंने 28 रनों की पारी खेली थी. दैट वाज अ स्टेडी इनिंग्स बाय मेघना. पर जो दूसरा मैच उनका था जीजी के खिलाफ, वहां पे केवल 4 रन बनाकर ही आउट हुई थी मेघना. आई थिंक 2 ही मौके मिले हैं उनको, और उसमें से एक जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वहां पे 28 रनों का योगदान था उनका, तो और एक मौका उनको जरूर मिलना चाहिए यहाँ पे. और डिवाइन को आरसीबी ने काफी हद तक टेस्ट करा है, 4 मैचेस उनको दिए थे एज एन ओपनिंग बैटर, पर कुछ ज्यादा नहीं कर पाए थे सोफी डिवाइन. तो आई थिंक एस मेघना के साथ ही स्टिक करेंगी आरसीबी. और मुझे लग रहा है कि जब मेघना नंबर 3 पे आती थी बल्लेबाजी करने के लिए, हालांकि उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट करा था नंबर 3 पे भी, पर आई थिंक जब उनको ओपनिंग का मौका मिलता है, व्हेन शी गेट्स टू बी देयर राइट फ्रॉम बॉल 1, उनको और भी ज्यादा लाइसेंस दे रहा है आरसीबी कि आप जाए और पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करके आए. क्योंकि नंबर 3 पे जब वो बल्लेबाजी करने आती थी, आपने देखा होगा कि यूजुअली सोफी डिवाइन का विकेट जल्दी चला जाता था, तो थोड़ा प्रेशर आता था, थोड़े दबाव के अंडर होते थे मेघना, इसीलिए थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड वो खेलने की कोशिश कर रहे थे. पर आई थिंक आरसीबी ने आई थिंक उनको रोल दिया है कि आप जाइए, आपके पास एग्रेसिव गेम है, अटैकिंग प्ले ऑफ क्रिकेट है, तो आप जाइए, पूरा इस्तेमाल करिए पावर प्ले और रन्स कंट्रीब्यूट करिए. तो मुझे लगता है कि एस मेघना और स्मृति मंदाना के साथ ही आरसीबी स्टिक करेगी एज एन ओपनिंग पेयर. बट देखना होगा कि आज अगर अनसक्सेसफुल रहते हैं एस मेघना, तो आई थिंक कुछ सोच विमोश होगा आरसीबी के खेमे में. पर आज के मैच के लिए मुझे लग रहा है कि एस मेघना और स्मृति को ही हम देखेंगे ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए. So, Pratik, what are your views on this question? Well, as a whole, Smriti and Meghna opening would and is suiting well RCB purely because Meghna does possess the qualities of an opener, someone who can make use of the power play, and she's not someone who purely relies on power, but also goes by the textbook shots, which goes on to complement her game. And about Sophie Devine, she's been given enough number of opportunities where she wasn't able to capitalize on all of them. And also that if
Divine does go and play up the order, RCB would miss the finishing touch to their innings, because right now you've gotten Sophie Devine, Richa Ghosh, and Georgia Varam. The last game she pitched in. So with these three girls at the bottom of the order, you are confident that even if the openers do not live up to the expectations, your innings would still be taken to a good total. So from that perspective, Meghna opening and Divine playing down the order would make much more sense. But obviously, like Julie mentioned, if results aren't delivered with this batting combination, then the RCB think tank would have to do something different and chop and change the batting order to get the best of it. यश, आपकी क्या व्यूज है इस ओपनिंग पेयर के सिचुएशन पर? आई थिंक जैसे कि सबने कहा कि शबी नैनी मेघना को एक और आज का मैच अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ओपन करने के लिए, और फिर देखना चाहिए कि आज के मैच में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती है कि नहीं, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था कि स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी बॉल्स ईट अप किए थे, उसकी वजह से वो लास्ट में वो उनको शॉट पड़ा था 19 रन। तो वो एक शेल में नहीं जानी चाहिए और उनका नेचुरल गेम उनको बैक करना चाहिए। तो अगर वो करती है तो वो फिर वापस सक्सेसफुल रहेगी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। So let's quickly move on to our fantasy playing 11s for the day. Julie, why don't you get us started with them? फैंटेसी पिक्स आज का आरसीबी डीसी के मैच में एक विकेट कीपर है मेरे फैंटेसी पिक्स के अंदर, ऋचा घोष, जो आरसीबी की विकेट कीपर और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है। आक्रामक बल्लेबाजी करती है। पिछले 2 मैचेस में उनको स्टार्ट्स मिले पर एक बड़ा स्कोर आया नहीं उनके बल्ले से, तो आई थिंक शी इज लॉन्ग ड्यू फॉर अ बिग स्कोर। तो ऋचा घोष है। उसके बाद 4 बल्लेबाज रखे हैं मैंने टीम के अंदर। मैगलैनिंग जो मेरी वाइस कैप्टन होगी इस फैंटेसी पिक्स के अंदर, और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है और सलामी बल्लेबाज भी है, लाजवाब फॉर्म में है। हमने देखा है पिछले मैच के अंदर भी एक 60 रनों की पारी उनकी आई थी। और उसके बाद स्मृति मंदाना जो आरसीबी की कप्तान है और सलामी बल्लेबाज है, उनको भी टीम के अंदर रखा है। अच्छी शुरुआत देती है वो आरसीबी को, हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा है उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। जेमिमा रॉड्रिग्स जो नंबर 4 पे आती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए बल्लेबाजी करने के लिए। पिछला मैच तो स्टार्ट मिला पर बड़ा स्कोर कर नहीं पाई थी, पर उसके पहले हमने देखा था एमआई के खिलाफ जो 60 प्लस का इनिंग्स उनका था, वो मैच विनिंग नॉक उनके बल्ले से आया था, तो वो भी धीरे धीरे मोमेंटम और फॉर्म पकड़ रही है। और शेफाली वर्मा डीसी की ओपनिंग बल्लेबाज और मैगलैनिंग की ओपनिंग पार्टनर, तो इनको हम ऑब्वियसली टीम के अंदर रखेंगे। पावर प्ले के अंदर बहुत एक्सप्लोसिव होती है ये बल्लेबाज, तो शेफाली भी है टीम के अंदर। और 4 ऑलराउंडर्स है इस फैंटेसी पिक्स के अंदर। जेस जॉनसन जो मेरी कप्तान है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और मिडिल ऑर्डर में काफ़ी यूजफुल रन्स कंट्रीब्यूट कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। फिलहाल टॉप ऑफ द टेबल है। अगर आप विकेट्स कॉलम देखें तो 10 विकेट्स चटका है उन्होंने और केवल 4 मैचेस में ही, तो अच्छे फॉर्म में भी है, काफ़ी कंसिस्टेंटली भी परफॉर्म कर रही है डीसी के लिए। उसके बाद एलिस पेरी जो आरसीबी की लेजेंडरी ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और तेज गति से गेंदबाजी भी कर सकती है और एक यूटिलिटी प्लेयर मैं कहूंगी इनको, और सिंगल हैंडेडली आई थिंक शी कैन विन एनी मैच फॉर यू। उसके बाद जॉर्जिया वैरम, जिसकी प्रतीक ने भी बात करी कि पिछले मैच में जो वो 48 रनों की उनकी पारी आई थी, उसकी वजह से आई थिंक जो डिफीट का मार्जिन था जीजी के खिलाफ वो आरसीबी का कम करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो गेंदबाजी भी इनकी अच्छी होती है, लेग स्पिनर है और बल्लेबाजी से भी आई थिंक लोअर ऑर्डर में रन्स कंट्रीब्यूट कर सकती है। उसके बाद एलिस कैप्सी जो डीसी की नंबर 3 पे आने वाली बल्लेबाज है और ऑफ स्पिनर भी है। थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ रही है पिछले कुछ मैचेस हमने देखे, पर पहला मैच जो उनका हुआ था उसमें उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई थी, पर उसके बाद थोड़े थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस आए। बट अगेन आई थिंक लाइक ऋचा घोष शी इज ऑल्सो लॉन्ग ड्यू फॉर अ बिग इनिंग्स फॉर दिल्ली कैपिटल्स। और उसके बाद आखिर में मैंने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को रखा है, सोफी मोलिन्यू जो आरसीबी की लेफ्ट आर्म स्पिनर है और राधा यादव जिनके नाम भी 10 विकेट्स है। शी इज द सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप विकेट टेकर्स अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है इस टीम के अंदर। इस फैंटेसी पिक्स में हम मारिजान काप को नहीं देख रहे क्योंकि पिछले मैच भी हमने देखा था उनका मिस हुआ था यूपी वॉरियर्स के सामने जो डीसी ने मैच खेला था, सोर हैमस्ट्रिंग के कारण वो मैच मिस हुआ था मारिजान काप का। तो आज देखना होगा, अगर आज वो फिट है तो वो जरूर डीसी के प्लेइंग 11 में आएंगे और ऑब्वियसली अगर वो प्लेइंग 11 के अंदर आएंगे तो फैंटेसी पिक्स में भी शामिल होंगे। बिल्कुल। प्रतीक, व्हाई डोंट यू शो अस योर फैंटेसी प्लेइंग 11 फॉर द डे? Yeah, so even I would have Richa Ghosh as my wicket keeper. She's been a very reliable batter at the lower middle order, and
more often than not, she comes to give that extra push to the RCB innings to maximize the run scoring. And for the batters, we have starting off with Meg Lanning, who's also the captain for my fantasy playing 11. We've discussed on n number of occasions about her taking along the innings with her, and anchoring it until she latches on to the bowlers, and that quality of hers has gone on to favor the Delhi Capitals largely. So I am hopeful that from the Delhi's perspective, that her role definition remains the same for today as well. Then Smriti Mandana, one of the uh, top batters for RCB this season. She is currently second on the highest run scorers. More often than not, she's capitalized on the opportunities and made sure that RCB do get a good start in the power play. So again, a very critical aspect for the Royal Challengers Bangalore. And then we've gotten Jemima Rodriguez from the Delhi Capitals. The last time around, she came in and played that innings. That was just brilliant because she did not take time to settle down, and the way she maneuvered the spinners with her slog sweeps, played the inside-out shots to the faster bowlers. I think that was a complete package for any finisher who plays the game of cricket. So again, her role would remain the same, and if she comes a little earlier to bat, it's just about seeing away the middle phases so that you go into the death overs and can uh, maximize your run scoring abilities. Shafali Verma, someone who complements Meg Lanning's game, because Lanning has always gone on to take some time at the top, and at that phase, Shafali has made sure that the run scoring does not stop. So the relationship both of them hold is critical for Delhi to get off to a good start in the power play. And for the all rounders, we've gotten a couple of world class contenders, starting off with Jess Jonassen. With the ball, she comes at the middle overs, and a very simple bowling action with limited variations. But the thing that stands out for her is her accuracy. And again, with the bat, a very lethal contender lower down the order. Elise Perry for the Royal Challengers Bangalore. She's gotten a couple of good batting performances on her back and would continue to do the same. Although she hasn't bowled much of late, but when given an opportunity by Smriti, it is important for her to uh, bowl the right lines and lengths so that she could be as a reliable sixth or seventh bowling option. Sophie Devine, again, like we mentioned, she's not looking, in her purple patch with the bat. Although she has gotten runs of late, she's gotten off to a couple of good starts, and I'm hopeful that those starts do get converted as we go into the tournament now, as it is important for her to accumulate runs at the bottom order so that RCB maximize the run scoring ability. And then Georgia Wareham, the last time around, almost won the game for RCB. So again, both with the bat and ball, she'll play a crucial role. Alice Capsey, my vice captain. So for Delhi Capitals, you've gotten Lanning and Shafali Verma at the top, and then one down Alice Capsey. So that is power packed there, and they have operated in a similar fashion. So it's important to Capsey to come over and play her actual game. That is, to get going with the boundaries itself. The last time around, she did struggle quite a bit, and then struck a couple of sixers, after which she had to depart. So we knew that she wasn't timing the ball like she always does, and that is totally acceptable because as players you're going to have off days. But let's just hope that she's in her optimal form today for the Delhi Capitals. And Radha Yadav, the left arm spinner, again, she's one of the highest wicket takers this season and has bowled to a good line and length and has bowled to Meg Lanning's plan. So, again, a crucial role for Delhi's chances today. So that's my fantasy pick. So let's quickly move on to our key players for the day. Our first key player for today is Meg Lanning. बतौर कैप्टन और बैटर है, इस सीजन की ऑरेंज कैप होल्डर है, और अपार्ट फ्रॉम दैट वो WPL हिस्ट्री की हाईएस्ट रन स्कोरर है. This season she scored 261 runs. Highest score has been of 60,
and her average has been of 43.50. Julie, your views on how important a player Meg Lanning is from Delhi? एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मैगलैनिंग कप्तान है, ओपनिंग बैटर है दिल्ली कैपिटल्स की और ऑरेंज कैप होल्डर। जैसे कि आपने कहा, इस सीजन अभी तक उनके सर पे है ऑरेंज कैप, और पिछले सीजन WPL 2023 में भी हमने देखा कि शी एंडेड अप विद द ऑरेंज कैप। दिल्ली कैपिटल्स वो फाइनल जीत नहीं पाया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, पर मैगलैनिंग का कंट्रीब्यूशन हमें पता है कि दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में ले जाने में शी हैड अ लायंस शेयर। तो इस सीजन भी उन्होंने वैसे ही कुछ करा है। She's completely taken the responsibility of Delhi's batting and especially last 3 मैचेस अगर आप देखें तो पिछले तीनों मैचेस जो डीसी ने खेले हैं मैगलैनिंग ने हाफ सेंचुरी लगाई है। तो यही दिखाता है कि ये क्या बेहतरीन फॉर्म में है। इतनी कंसिस्टेंसी T20 क्रिकेट के अंदर देखना बहुत ही लाजवाब होता है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी फैन के लिए। और आई थिंक जो जिसकी हम बात करते हैं कि हु इज द मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर, अगर आप किसी को भी पूछते शायद जो फॉलो कर रहा है दिल्ली कैपिटल्स को इस WPL के अंदर, तो मेरे ख्याल से मैगलैनिंग का ही नाम लेंगे लोग। और अगर ये 6 मैचेस भी अगर हम देखें तो 4 हाफ सेंचुरीज आ चुके हैं, तो ये दिखा रहा है बहुत कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म करा है। एवरेज भी आपने जैसे कि बात करी 44 का उनका एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी मुझे याद है कि सीजन के शुरुआत में जो 110-112 का स्ट्राइक रेट था, वो स्ट्राइक रेट भी अभी थोड़ा ऊपर जाके अभी 124 पे पहुंचा है। तो ये अच्छे साइंस है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि शेफाली वर्मा जब उनके साथ बल्लेबाजी करती है, वी ऑल नो कि शी इज एन अटैकिंग बैटर, तो उनके शॉट को अगर मैच नहीं करा मैगलैनिंग ने, तो भी एक रिलेटिवली बेटर स्ट्राइक रेट के साथ भी स्कोर करा, तो वो जो पावर प्ले है उसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएगी दिल्ली कैपिटल्स। तो आज भी उनके ऊपर वही दारोमदार होगा कि बल्लेबाजी जब भी आए दिल्ली कैपिटल्स की, इफ दे आर पुटिंग अप अ स्कोर और इफ दे आर चेजिंग, मैगलैनिंग का रोल सेम होगा। ज्यादा से ज्यादा ओवर्स खेलने की उनकी कोशिश रहेगी, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उनको बैटिंग करना होगा। और आई थिंक ऑरेंज कैप के जो लिस्ट में अगर हम देखें तो स्मृति मानधना जो आज फीचर करेंगी RCB के लिए, वो काफी करीब है, केवल 18 रन ही दूर है। तो आई थिंक मैगलैनिंग के दिमाग में ये भी होगा कि आज उनको एटलीस्ट स्मृति को आउट परफॉर्म करना है और वो ऑरेंज कैप बरकरार रखनी है उनके सर के ऊपर। बिल्कुल। यश, आपके क्या व्यूज है मैगलैनिंग के रोल पर आज के मैच में? आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर विद द बैट रही है मैगलैनिंग अब तक की। बट अभी ये देखना होगा कि शेफाली वर्मा का जो एक रोल है वो भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा है कि शेफाली वर्मा ने स्टार्ट में थोड़ा इम्पैक्ट दिया, बट वो कैरी ऑन नहीं कर पाए बड़े इनिंग्स के लिए। और फिर बाद में मैगलैनिंग ने एज यूजुअल पूरे इनिंग्स को एंकर करते वक्त एक अच्छे टोटल तक पहुंचाया। बट इस बार मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली मैगलैनिन अगर जल्दी आउट हो जाती है तो फिर दिल्ली को एक ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि एक गुड टोटल का खड़ा करना, क्योंकि शेफाली वर्मा का अभी तक का जो स्टार्ट रहा है वो बड़े इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो वो एक क्रूशियल पॉइंट है So मैगलैनिन के। let's move on to our next key player for the day. That is Chess Jonathan. बतौर ऑलराउंडर है, एक वाइटल रोल प्ले करती है दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग लाइनअप में। करेंटली पर्पल कैप होल्डर है, विकेट्स 10 लिए है उन्होंने इस सीजन, और बेस्ट फिगर्स 3 for 21 के रहे हैं। सो इफ यू आर फ्रॉम अ दिल्ली कैपिटल्स डग आउट, you are probably thinking everything is lovely in the team. We have the purple cap holder, we have the orange cap holder, we just have to go and perform. So Julie, I'll open the question to you कि क्या आज का रोल होगा उनका? जेस जॉनसन लाजवाब फॉर्म में रही है। अगर हमने देखे वो चारों मैचेस उनके जो थे, पहले 2 मैचेस उन्होंने मिस करे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स आई थिंक दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। इतने अच्छे ऑलराउंडर्स है कि पहले जो 2 मैचेस थे वहाँ पे जेस जॉनसन को प्लेइंग 11 के अंदर मौका नहीं मिला, पर उनको जो पिछले 4 मैचेस में मौका मिला है, आई थिंक शी हैज ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। 4 मैचेस 10 विकेट्स, और उसमें से भी अगर हम ब्रेक करें तो पहले 3 मैचेस में 3-3-3 ऐसे विकेट्स थे उनके नाम। तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जब इतने विकेट्स चटका रहा है एक टीम के लिए, तो ये अच्छे साइंस है उनके लिए। और ऑब्वियसली हमें पता है, और हमने देखा है जेस जॉनसन को ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए, या ब्रिस्बेन हीट के लिए जब भी वो WBBL खेलते हैं, या फ्रेंचाइज क्रिकेट अलग अलग देशों में जब वो खेलती है, जो उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है वो काम में आता है। और WPL के अंदर भी वैसे ही कुछ हुआ है। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करी है। उनको जब भी मैगलैनिंग ने मौका दिया है, मिडिल ओवर्स हो, डेथ ओवर्स हो, कभी भी उनको मौका दिया है कि आई थिंक जेस जॉनसन हैज प्रूव्ड हरसेल्फ टू द फील्ड। वो गेंदबाजी करती है और विकेट्स चटकाने में उनका योगदान बहुत रहा है। पार्टनरशिप्स जब भी फॉर्म होती है तब मैगलैनिंग
आई थिंक शी लुक्स टू जेस जॉनसन और ब्रेक थ्रूज दिलाने में उनका रोल काफ़ी अहम रहता है। और अगर हम राउंड 1 भी देखें, जेस जॉनसन का कैसा प्रदर्शन था जब आरसीबी और डीसी पिछले बार मिले थे, तब जेस जॉनसन का बहुत इंटीग्रल रोल था। काफ़ी करीब थी, मैं कहूँगी, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने से। उनकी कॉम्पिटिशन मारिजान काप से ही हो रही थी, क्योंकि अगर आप वो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो काफ़ी इक्वल रहा, मुझे लग रहा है। जेस जॉनसन ने 3 विकेट्स चटकाए थे और मेरे ख्याल से 36-38 रन बनाए थे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ क्लोज टू 200। और वो जो मारिजान काप के साथ उनका पार्टनरशिप भी हुआ था मिडिल ऑर्डर के अंदर, उसके चलते ही आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स वर एबल टू पोस्ट दैट 194 ऑन बोर्ड। तो वही दिखा रहा है कि ये मिडिल ऑर्डर में भी अच्छे रन्स कर सकती है, गेंद से भी योगदान दे सकती है। तो किसी भी कैप्टन के लिए एक इतनी अच्छी ऑलराउंडर अपने प्लेइंग 11 के अंदर होना एक बहुत बड़ा एसेट है। तो आज भी वैसे ही कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे जेस जॉनसन से। Pratik, what are your views on Jess Jonathan as a key player today? Well, so to start off with what she brings to the table with the ball, more often than not, she's introduced in the latter half of the innings. And, so she's used to bowl in the death also with the older ball. And she keeps it quite simple, like I mentioned, and with not many variations, but she's very accurate with the pace. And, this accuracy of hers and the match awareness with which she bowls has aided her to get most of the wickets. And in a couple of occasions also, she's picked up about 2 wickets in an over, so that completely goes on to change the course of the game, especially if it's the second innings. So it is important for her to do it today as well. And as a left spinner, to bowl at the death definitely is not easy, but time and again she's done it. And she's proved as to why she lives up to her name. And again, with the bat, more often than not, she's come at the latter half of the innings. And with Jemima Rodriguez, she makes sure that the run scoring, at the back end of the innings is maximized. She's a very powerful contender and can send the sixes out of the park as well. So, her role both with the bat and ball would be extremely crucial. And I would say both at the latter half of the innings itself, because that is what she's been doing from the very beginning of this tournament. So I'm hopeful that she's in her element today. So let's move on to our next key player. That is from the RCB perspective. It's the captain स्मृति मंदाना. बतौर बैटर है इस सीजन में हाईएस्ट रन स्कोरर है आरसीबी के लिए. और फिलहाल ऑरेंज कैप की रेस में सेकंड है, जैसा जूली आपने मेंशन किया. सो इस सीजन उन्होंने 243 रन्स बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 80 का रहा है और एवरेज इज अ गुड एवरेज ऑफ 40.50. So Julie, what are your views on Smriti's role today? स्मृति मंदाना दोबारा एक्सपेक्टेड होगा उनसे कि अच्छी स्टार्ट दे. सबिनी मेघना जो उनकी ओपनिंग पार्टनर है, उनके साथ अच्छी साझेदारी करने की कोशिश करे, पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करे. पर उनके सामने एक कॉम्पिटिटिव या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग लाइनअप होगा. एंड आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स आफ्टर मुंबई इंडियंस, और प्रोबेबली आई वुड रेट देम क्वाइट इक्वली. तो एक टफ चैलेंज होगा उनके सामने दिल्ली कैपिटल्स का. तो देखना होगा कैसे हैंडल करती है. पर आई थिंक जैसे कि हम राउंड 1 की भी चर्चा कर ही रहे इस डिस्कशन के अंदर, अगर आपने राउंड 1 मैच भी देखा होगा इन दोनों टीमों के बीच, तो स्मृति मंदाना ने 74 रनों की वो पारी खेली थी. 74 रन उन्होंने स्कोर करे थे और बेहतरीन पारी उनके बल्ले से आई थी डीसी के ही सामने. तो वो काफी कॉन्फिडेंस दिलाएगा उनको जब ये राउंड 2 का मैच होगा. और मेरे ख्याल से अगर आप पॉइंट्स टेबल भी देखें तो आरसीबी के लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बाद मुंबई इंडियंस के सामने उनका मुकाबला होने वाला है. तो 2 टफ मैचेस आरसीबी को खेलने हैं. अगर उनको क्वालिफाई होना है तो दे वुड लाइक ऑब्वियसली टू विन बोथ द मैचेस. तो आरसीबी ने भी, उनको भी पता है कि अगर उनको मैच जीतना है तो उनके कप्तान का योगदान आना बहुत ज़रूरी है उनके लिए. उनको एक अच्छी स्टार्ट देना एक्सपेक्टेड होगा. और यूजुअली हम देखते हैं स्मृति के साथ कि अगर उनकी बैटिंग अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली सेकंड इनिंग्स में जब गेंदबाजी का मौका आता है तो वो कैप्टनशिप पे भी रिफ्लेक्ट होता है. या वाइस वर्सा हम कहेंगे, अगर पहले गेंदबाजी आती है तो आई थिंक उनकी अगर कैप्टनशिप अच्छी हो या उनके बॉलर्स अच्छे विकेट्स ले, जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रूज दिलाए, तो ऑटोमेटिकली वो उनके बैटिंग पे भी रिफ्लेक्ट होता है. तो आई थिंक वैसे आई थिंक आरसीबी के बाकी प्लेयर्स को भी अपने कप्तान को हेल्प करना होगा, सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमें पता है कि शी इज़ अ बिग मैच प्लेयर, जेन्युइन मैच विनर है आरसीबी के खेमे में, अच्छे फॉर्म में भी है. वो 80 का स्कोर
2 मैचेस पहले ही आया था, पिछले मैच में भी एक स्टार्ट मिला था उनको, पर बड़ा स्कोर नहीं आ पाए थे, 24 रनों की कुछ पारी खेली थी उन्होंने जीजी के सामने। पर आज एक मौका है, एक चैंपियन टीम के सामने, एक अच्छी टीम के सामने दोबारा स्कोर करना है उनको। और अभी तक जो करते आई है वो, उनका एवरेज भी 40 के ऊपर है और स्ट्राइक रेट भी 150 के ऊपर है, तो अभी तक उनका WPL बहुत अच्छा रहा है। तो आई थिंक आखिरी के जो 2 लीग मैचेस है, उनको वही फॉर्म कंटिन्यू करना होगा आरसीबी के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने वो क्वालिफिकेशन सिनेरियो डिस्कस किया, I'd like to just give some clarity regarding it. So the qualification scenario is if DC win tonight, they go through. So they just need the one win to qualify. But अगर RCB की बात की जाए तो they need to win both their games if they wish to directly qualify. But otherwise they have to win at least one game, and then the outcome of the UP Warriors and the Gujarat Giants game will decide their fate in the tournament. So here I'd like to take one fan question. That is, Georgia Wareham may be a key player for today's game for RCB. So यहाँ पे I'd like to give a few some stats. So Georgia Wareham, we've all seen her play a key role for RCB. She's made 81 runs this season. She comes way low down the order to bat, but we've seen her play that brilliant knock in the previous game. And wickets she's taken regularly. She's accounted for 6 wickets for RCB. So Pratik, I would like to ask you how important a player is Georgia Behram from the RCB perspective. Well, so Yazad, with the ball, she's made sure to come in and bowl at any phase of the game. And, in some way, if you look at her action, it, goes on in picture with Shane Warne. It's just about her run up and her follow through. So she finishes up nice and well, like a leg spinner, and keeps it flat as well. She is not someone who tosses it up too much. So, Wareham in the RCB bowling unit has more often than not played as a floater, because you do not see her coming and getting the first 2 over spell at the first half, and then another 2 overs at the back end of the first innings. So, the way Smriti has utilized her has gotten the best from Georgia Wareham. And, because she's a leg spinner, batters would definitely go and attack her. We've discussed about, the kind of long hitting batters that are there at the Delhi Capitals batting unit. So a big opportunity for her to step in, because from her point of mind, she would be elated to bowl to the batters who would attack her, because only if they're going to attack would her chances of picking wickets go up. So she needs to be proactive with her bowling and adapt to whatever track is there on offer today, and how the batters are playing, because when your leg spinners are doing good, it really uplifts the spirit in the team. And coming to her performance with the bat, the last time around, like we already spoke about it, she almost won it from nowhere for RCB, even when like no one was expecting that kind of an innings. So she's someone who makes use of her wrist extensively and generates power from there. Something I came to notice from her last innings. So with her as another finisher there, with the ranks of Richa Ghosh and Sophie Devine, it is a big add-on to the RCB unit, because at instances when Spriti Mandana fails, usually the top order also falters, because Spriti is someone who sets the tempo. God forbid that shouldn't happen, but if it goes on to happen, you know that you've gotten proper finishers at the bottom order, and also Georgia Wareham that adds to the batting unit. So she's someone who will play an extremely crucial role today. And with the increased awareness of us that she can also contribute with the bat, expectations will be more from her side today. यश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो प्रतीक ने कहा है उसमें? आई थिंक जॉर्जिया वेरम ने जब भी अपॉर्चुनिटी मिला है अच्छा बॉलिंग किया है, बट देखने वाली बात ये रहेगी कि उनको पूरा स्पेल मिलता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे उन्होंने उनका पूरा 4 ओवर का स्पेल किया है। तो अगर स्टार्टिंग के 2 ओवर्स में वो अच्छा कर रही है, विकेट्स ले रही है, तो आई थिंक शी शुड गेट अ फुल स्पेल टुडे। So let's quickly move on to our fan perspective for today. So from the Delhi perspective,
Delhi to become the second team to qualify for the knockouts. So if Delhi go on to win today, like we've previously discussed on the show, they would become the second team to qualify. After yesterday night's win, Mumbai Indians was the first team to qualify for the knockouts. Julie, what would you like to tell us? How important a game is it? बहुत इम्पोर्टेंट मैच है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि इसी मैच के अंदर एक जीत हासिल करके क्वालिफाई हो। हालांकि और एक मैच भी है दिल्ली कैपिटल्स के पास, बट ऑब्वियसली एज अ टीम आपको लगेगा कि जो पहला मैच आप खेल रहे वाले हो, लास्ट 2 मैचेस में से जो फर्स्ट मैच है, तो उसमें जीत हासिल कर ले और क्वालिफाई हो जाए। उन्होंने ऑब्वियसली पिछले मैच में ही चाहा होगा जब यूपी वॉरियर्स के सामने उनका कॉन्टेस्ट हुआ था, अगर वो मैच वो जीत जाते तो दे वुड हैव बीन द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई। पर वो केवल 1 रन से वो मैच हारे, और एक-एक रन का इम्पोर्टेंस आई थिंक टी20 क्रिकेट के अंदर उनको भी पता चला होगा कि कितना मायने रखता है एक-एक रन। तो आज उनका यही माइंडसेट होगा कि एवरी रन, आई थिंक जब भी वो फील्डिंग बॉलिंग करने वाले हैं, they are going to save every run come what may. You will see fielders just throwing themselves around, bowlers extra effort डालने की कोशिश रहेगी, और जब भी बल्लेबाजी का मौका मिलेगा they will try and see कि जो भी लूज बॉल से उनको पनिश करे, डॉट बॉल का परसेंटेज कम रखे, और पूरा आई थिंक 100% से भी थोड़ा ऊपर आई थिंक आज उनको देना होगा, क्योंकि वो पिछला जो उनका जो हार था वो काफी अनएक्सपेक्टेड भी रहा था उनके लिए, 1 रन से ही हारना। तो आज एक अलग अप्रोच से दिल्ली कैपिटल्स उतरेगी, और भी फायर हमें देखने मिलेगी उनके यूनिट के अंदर, और अहम मैच है। और आरसीबी के खिलाफ ऑब्वियसली इजी नहीं होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी। जैसे कि हमने बात करी है, आरसीबी भी एक अच्छी टीम है, काफी बड़े बड़े नाम है उस टीम के अंदर, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, स्मृति मंदाना हो, रिचा घोष, एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, तो ये दिग्गज प्लेयर्स है, तो आसान नहीं होगा डीसी के लिए भी। तो देखना होगा आज के मैच में क्या होता है, पर ऑब्वियसली डीसी फैंस चाहेंगे कि आज एक जीत रजिस्टर कर ले और क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि होम टर्फ पे, होम ग्राउंड पे ये मैच हो रहा है। दिल्ली लेग चालू है ये WPL के अंदर, तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि फैंस के लिए ये मैच जीते, क्वालिफाई हो और आगे के राउंड के लिए वो खेले। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, when Delhi go on to win today's game, then they will be in the race to finish first, जिससे आप डायरेक्ट फाइनल खेलोगे। और apart from that, it just gives you a cushion in the last game कि आप थोड़ा you know थोड़ा bench strength अपना ट्राई कर सकते हो if you want to cover a few extra bases. I'd like to move on to my next fan perspective, that is from the RCB perspective. RCB need to win tonight to consolidate their place in the top three. Pratik, I would like to ask you, how important a game is it from an RCB perspective? Well, it is, the most important game I'd say that they'll be playing in this tournament right now, because they're coming off quite a disappointing loss and against Gujarat Giants. So obviously the atmosphere the last time around when they lost wouldn't have been great in the team, because the players who were assigned with certain roles did not live up to the expectations, which led to the downfall. But again, a crunch game today, and RCB find themselves playing the do or die game. And if it does not go in their way, then again the calculators would come out, and you would hope that someone else loses a game so that we go on and win it from here. So it is important for Smriti Mandana, to make sure and set the tone in the dressing room, where the pressure isn't there. You need to play with the attitude of that you have nothing to lose, because the fearless brand of cricket often wins you games, and both with the bat and ball they have been dicey the entire tournament. There have been games where they've absolutely dominated, but again the same set of players haven't been able to come up and win the game for RCB at each instance. And opposed to teams like Mumbai Indians and Delhi Capitals, you've gotten a new match winner for every game. Someone new who stands up and makes sure that you go through the line and win the game. And I think RCB have lacked on this very aspect. On the batting front, they have heavily relied on Priti Mandana at the top. Even though they have gotten contributions lower down the order, they haven't been notable, and they haven't helped RCB in particular to go on and win games. And even with the ball, the last
couple of games, their X factors who they come up with, say Sophie Molyneux or even Shobha. She's gone for runs, and RCB haven't able to come back in the game, and have often lacked answers with the ball. So it would be interesting to see how Smriti would use her bowlers today in this game, because the last time around, conceding 190 I feel was a little too much, and adding on to that, they were also a little shabby on the field. So these little things would go on to make a huge difference at the back end. And if RCB makes sure that they do not concede the 10-15 run cushions at the back end of the innings, it would become much more easier for them. So just interesting to see how today's game would pan out, and for RCB fans, fingers crossed. So I'd quickly like to move on to our next segment of the show, that is the matchups. Our first matchup is from the Delhi Capitals point of view. It's Alice Capsey versus the spinners. So today she'll be facing a lot of spinners. We know Asha Shobhana, there's Georgia Wareham, Sophie Molyneux. So there is a variety of spinners in the RCB attack. Though the stats read that she's been dismissed 40 times out of her 77 dismissals in women's T20s against the spin, and her average is 22.72. So you can say in one way that she's gone after the spinners and been dismissed, but eventually T20 is that game. We've often used that term dangling carrots. So there are going to be the odd boundaries, but eventually if you get her wicket, I think RCB is winning on most occasions in that matchup. So Julia, I'd like to take your views. आई थिंक एलिस कैप्सी को ऑब्वियसली जैसे कि आपने बात करी आज़ाद, काफ़ी स्पिनर्स का सामना करना होगा जब वो आरसीबी के सामने मैच खेलेंगे। आशा शोभना हो, जॉर्जिया वेरम हो, सोफी मोलिन्यू हो, और हमें पता नहीं श्रियंका पाटिल प्लेइंग 11 का हिस्सा होगी कि नहीं, पर अगर वो होती है तो और एक ऑफ स्पिनर का सामना उनको करना पड़ेगा। तो एलिस कैप्सी लास्ट टाइम अराउंड व्हेन शी प्लेड अगेंस्ट आरसीबी, मुझे वो ओवर अभी भी काफ़ी फ्रेश है मेरे दिमाग में और काफ़ी याद है वो ओवर। आपको याद होगा अगर आशा शोभना के खिलाफ उनका जो आई थिंक आशा का पहला ओवर था, एंड एलिस कैप्सी मेरे ख्याल से पहला बॉल उन्होंने स्वीप करा, दूसरा बॉल रिवर्स स्वीप करा, तीसरा बॉल कीपर के ऊपर से उन्होंने शॉट लगाया, चौथा बॉल कुछ स्विच हिट करा। तो आई थिंक जो जो भी शॉट्स है उनके आर्मरी के अंदर, उन्होंने आई थिंक वो सारे शॉट्स एक ही ओवर के अंदर उनका ट्राई करने का आई थिंक इरादा था। तो काफी एक्सपेरिमेंटेटिव क्रिकेटर भी मुझे लगती है, काफी रिस्क लेना उनको पसंद है। यंग है, बहुत ज्यादा यंग है, केवल 19 साल की ये खिलाड़ी है, पर ऑलरेडी इंग्लैंड के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुकी है। तो मेरे ख्याल से काफी मेच्योरिटी के साथ भी वो स्पिनर्स को खेलना पसंद करती है। पर आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के अंदर उनको रोल दिया गया है कि आपको जाना है और अटैक करना है, बॉल 1 से ही आपको अटैक करना है, तो वही रोल उनको दिया होगा। तो इस WPL के अंदर भी हमने वैसे ही कुछ उनसे देखा है, पर ऑब्वियसली स्पिनर्स का चैलेंज उनके सामने थोड़ा सा टफ जरूर होगा। स्पिनर्स ने भी देखा होगा कि एलिस कैप्सी को भी अटैक करना पसंद है, तो उनको आई थिंक वो थोड़ा फीड भी करेंगे कि शायद थोड़ा टॉसअप करके भी डिलीवरीज करेंगे, उनको कहेंगे आप अटैक करो, और आई थिंक प्रोबेबली डीप फील्डर्स में वो फील्ड प्लेसमेंट भी वैसे कुछ करने की कोशिश रहेगी स्मृति मानधना की। बट एलिस कैप्सी को ऑब्वियसली आई थिंक उनका जो नेचुरल गेम है वो छोड़ना नहीं होगा। आई थिंक अटैक इज द बेस्ट डिफेंस फॉर एलिस कैप्सी, तो उनको वही उनको स्ट्रेंथ्स को बैक करना होगा। और जैसे कि राउंड 1 की मैंने बात करी थी, वो 46 रन उन्होंने स्कोर करे थे आरसीबी के खिलाफ, तो रन्स आए हैं इस ऑपोजिशन के सामने, तो ज्यादा कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए एलिस कैप्सी को। जब भी उनको मौका मिले बल्लेबाजी करने का, जस्ट गो आउट देयर, जो भी शॉट है फुल्ली कमिट होकर खेले, पूरा 100% देने की कोशिश करे। जब भी हम हाफ हार्टेड शॉट्स खेलने की कोशिश करता है कोई भी बल्लेबाज, तभी चांसेस होते हैं कि वो कैच आउट होने का आई थिंक वो होते हैं। पर अगर आप पूरे 100% दे, आप फुल्ली कमिटेड हो उस शॉट को, तो मुझे नहीं लगता कुछ मौका दे पाएंगे आरसीबी के बॉलर्स को आज एलिस कैप्सी। Bilkul. I'd quickly like to move on to our next matchup. Pratik, so the matchup for today is that Richa Ghosh against the spinners. If we have the right figures, she's been dismissed 36 out of 59 times against the spinners in her women's T20s, and her average is 16.27. So Pratik, what are your views on this matchup? Well, Azad, so again, in Pratik, my view, I'm so sorry. I'm so sorry. You'll have to wait for a bit. We have our toss right now, so it's toss time. So just hold on for a minute. I'll come back to you.
So the news from the center is that Delhi Capitals have won the toss, and they are going to be batting first. So that's the news. So I'll let you continue with your matchup. Yeah, so in my view, Richa Ghosh has always been a player who is solely relied on her powers and does not follow the conventional textbook shots like we've discussed time and again. And she's also someone who's always liked pace onto the bat. So quite naturally, it is difficult for her to play the spinners because she likes the pace on the deliveries. But again, to keep it simple as a batter, all you have to do is get to the pitch of the ball as close as possible or get away from it on the back foot and pull the ball. Her dismissals have again come out because she's not committed to a shot wholeheartedly, and there have been several soft dismissals as we call it. So again, to keep it simple, just spend a little time around there in the middle if spinners are bowling at the moment, and then slowly get on by playing the occasional drives and then going for the big hits. But usually Richa's role in this very team of RCB is to come lower down the order and go for the big hits. And, that is usually also a phase where the faster bowlers come on. But, you know, they've had a few batting collapses, which has forced Richa to come up early in the innings. So just keep it simple, rotate, strike. And like we've discussed, the best place to watch the game is from the non-strikers end. So, if she does her basics right, she would be good to go against the Delhi Capitals. तो यश आपके क्या व्यूज है इस मैचअप के बारे में? I would like to agree with Pratik what he said कि नॉर्मली तो वो लास्ट के 4-5 ओवर बचे रहते हैं एज अ फिनिशर के रोल में आते हैं, बट अगर कोलैप्स करते हैं और उनको जल्दी आना पड़ता है तो इनिशियली स्ट्राइक रोटेट करके फिर बाद में स्लोली टेक ऑन द बॉलर्स कर सकते हैं, तो वो उस तरीके से वो अपने इनिंग्स में सेटल भी हो गए और फिर आगे जाके वो अटैक करके स्ट्राइक रेट अपना जैसे कि यूजुअल है उनका वो बढ़ा के खेल सकते हैं. So the news from the center is that Delhi Capitals have made the change that Marizan Cap is back for Annabelle Sutherland. Meanwhile, RCB have made three changes to their lineup. The three changes have not come through yet, but the news is Shraddha Pokharkar is going to be making her debut, and Shriyanka Patil is back in the playing 11. I'd like to take your predictions quickly. Julie, who do you think is going to win today? मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स आज का मैच जीत जाएगी। पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है उनको, मैगलैनिंग ने अच्छा टॉस जीता है और पिछली मैच भी अगर हम देखें जो दिल्ली कैपिटल्स ने दिल्ली के अंदर खेली थी आरसीबी के खिलाफ, पहले बल्लेबाजी करी थी, 194 रन बनाए थे और फिर बाद में 169 रन पे समेटा था आरसीबी को। तो आज भी मैं वैसी कुछ उम्मीद कर रही हूँ, पहले उनको बल्लेबाजी का मौका मिला है, एक बड़ा स्कोर पोस्ट करेंगे दिल्ली कैपिटल्स और उसके बाद स्कोर डिफेंड भी करने में सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। Yash, who do you think is winning today's game? I would like to go with Delhi Capitals. Pratik? Yeah, so I would go on to back the Royal Challengers Bangalore purely because they would be chasing today, and in the last couple of games that have happened at this very stadium, the teams have gotten close, and a few other teams have gone on to win the games and lost the games. So they have come close, and I'm just hoping that this is one of that day where players like Sophie Devine do step in and make the difference lower down the order. Okay. So that is our show for today. But I would like to quickly discuss fantasy teams which we have shown on our channel previously. So I'll just give me a moment. So considering that we have Shraddha Pokarkar making her debut, Marizan Cap making her comeback, so we can include them in our team. So I'll just quickly run you through the teams. We have an issue with the display right now.
So our first team, which is a safer team, has Richa Ghosh, who's our batter from our keepers, and we have Meg Lanning, Smriti Mandhana, Shafali Verma. Smriti Mandhana is my vice captain. Our all-rounders are Jess Jonathan, Ellis Perry, Sophie Devine, and Marizan Kapp, because she is playing today. अगर वो नहीं खेल रही होती तो I would not have her in my team. The captain in this side is Jess Jonathan. We have Georgia Wareham and Alice Capsey as well in this team. So in the bowling point of view, we only have Radha Yadav, but you can make the change and add in Arundhati Reddy as well. Considering that the Delhi Capitals will be bowling second, there are chances of seam movement in the second innings. So I would also consider it making Marizan Kapp my vice captain. So this was a safe team. And moving on to our Grand League team, the Grand League team has Richa Ghosh, Meg Lanning, Smriti Mandhana, Jemima Rodriguez. Jemima Rodriguez played those 2 good innings, but she has failed to capitalize on other occasions. But she's shown a lot of potential this season. In the all-rounders, I have Jess Jonathan, Ellis Perry, and Marizan Kapp. I've made her the captain in this side. जॉर्जा वेरहम भी है इस साइड में, उन्हें वाइस कैप्टन बनाया है मैंने. एलिस कैप्सी है. और बोलर्स में मैंने सोफी मॉलिन्यू और राधा यादव को लिया है. आप चाहे तो दूसरे बोलर्स भी ट्राई कर सकते हैं, कंसिडरिंग दैट श्रियंका पाटिल इज आल्सो बैक इन द प्लेइंग 11. So this was our preview and fantasy picks for today. If you want a detailed video about our fantasy predictions, please click on the link in our YouTube video description box. Thank you for tuning in. We'll join you again tomorrow with yet another episode of Female Cricket Live. Thank you.